Hello everyone, welcome you back in this physics video. Today we are going to start projectile. What is projectile? It is anything which is thrown up in the air which moves under the gravity alone. So this body is known as projectile. As example student, you are having a stone in your hand, you have thrown up it in the air. So this body, this stone, it goes under the effect of gravity in a curved path and it falls back on the ground. Therefore, this stone, it is projectile. And similarly that if there is a football over the ground and you apply a force to it, so it flies up in the air and after moving under the effect of gravity in a curved path, it falls back on the ground at a distance from you. So this football, it is projectile. So thus we are looking over here that we are providing some initial velocity to these bodies and thereafter they moves under the effect of gravity in a curved path in the air and then they falls back on the ground again. Okay, so these bodies are known as projectile and the path in which these bodies are going to move, so this path it is said to be projectile path. It is projectile path and the motion of projectile along this curved path, it is known as projectile motion. So here it is projectile motion. So what is projectile motion? The motion of projectile along that curved path under the effect of gravity. Now let us look over here student, and that is that aeroplane example of a projectile. So just to compare this aeroplane, हमारे पास ये जो aeroplane है, let we have this is aeroplane over here. Okay, here it is the aeroplane. So is this the example of that projectile as well? Student, this aeroplane, it is not the example of a projectile. Why it is not an example? If you will look to your both the example, both of these were moving in the air without any help of this engine. Okay, so they are moving under the effect of gravity only. But here if you will look to this aeroplane, so aeroplane moves in the air with the help of engine. So therefore it is propelled by the engine. So there we can't say this is a projectile and the path which it will follow, it is a projectile motion. Okay, so therefore projectile is what? Anything which is projected in the air which moves under the effect of gravity in a curved path. So this is projectile. So where we have seen the projectile motion. So student, projectile motion, that while you are in the ground and you are having a shot put in your hand, so you are throwing up this shot put in the air so that it will go through a longer distance. Okay, so this shot put which you are using over there, this is what? This is that projectile. Okay, and when we are going to fire a gun, so that bullet, so this bullet, it travels through the air and it moves under the effect of the gravity. Okay, so therefore this bullet, it is also having that curved path under the effect of gravity. So it is having that projectile motion. And similarly over there in cricket, when this ball is hit hard by that batsman to six, so this ball it goes up in the air out of the boundary. Okay, so therefore that motion of this cricket ball, it is going to be that's a projectile motion. Okay, so over here we are going to have, there is the study of projectile. Now just to observe in this example student, as we were throwing up a stone in the air, so here this stone, it was doing two motion at a time.
जैसे ही आप इस स्टोन को कर रहे थे स्टूडेंट, इस तरह से आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया था, ठीक है, तो ये क्या करता था, एक साथ दो मोशन कर रहा था। वन, दैट इट वॉज मूविंग अलॉन्ग दिस ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, एंड सेकेंड थिंग इट वॉज अटेनिंग द हाइट, और ये क्या कर रहा था, ग्राउंड से ऊपर एक हाइट भी अटेन कर रहा था। जस्ट टू चेक इट, इफ़ वी विल नोट अ पोजिशन एट दिस, यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी हाइट स्टूडेंट, और यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है अपने इनिशियल से, ठीक है, सो दिस इज दैट, इफ आई विल राइट इट इज h1, here it is x1. now at this position its height, let it is h2, and its position from initial, so it is x2. so we are finding कि जैसे जैसे ये बॉल आगे की तरफ जा रही है उसमें क्या हो रहा था, उसका मतलब कि हाइट भी इंक्रीज होती जा रही थी, और साथ ही साथ वो अलोंग द ग्राउंड भी डिस्टेंस मूव कर रहा था। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन जो था उसका वहाँ पर चल रहा था, ठीक है, तो जिसमें एक मोशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग था और एक मोशन वर्टिकल के अलोंग था, ठीक है। सो देयरफॉर this combination motion that which is due to of this horizontal direction and that motion which is along vertical direction, तो इनको स्टूडेंट हम बोलते हैं दैट दीज आर इंडिपेंडेंट मोशन। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। ओके, सो हेयर दैट वी विल से दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, it is the combination of one which is motion along horizontal so with uniform speed। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो कांस्टेंट रहती है, और दूसरा इसमें होता है दैट वर्टिकल मोशन विच इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, under gravity which it performs there. So in this case that acceleration will be uniform। तो वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। सो दस वी गेट दैट जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, वो एक तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होता है और दूसरा वर्टिकल। तो ये जो दोनों ही मोशन है स्टूडेंट ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मीन्स टू से कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो वर्टिकल मोशन से अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली वो क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, और जो वर्टिकल है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता रहता है। तो इसलिए दोनों मोशन दैट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज दैट प्रिंसिपल ऑफ physical independence। so if it is said that what is the principle of independence, physical independence of motion, so this means that the horizontal motion of that projectile with the uniform velocity and this vertical motion under gravity with the uniform acceleration, they are independent to each other। so this is said to be principle of physical this independence of motion। okay, now while we are going to consider this projectile motion student, we are going to assume something। so here something that we are going to consider or assuming। okay, so what is that assumption which we have made during this projectile? so first thing that we will consider that there is no air, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो एयर है एयर फ्रिक्शन अप्लाई करती है, तो इसलिए हमारे पास जो मोशन है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए देयर नो एयर, ओके, सो विच विल प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस, देयरफॉर नो एयर रेजिस्टेंस टू प्रोजेक्टाइल। एंड सेकेंड थिंग दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो जो अर्थ है, अर्थ अपने तरफ भी, अपने चारों तरफ भी क्या करती रहती है, घूमती रहती है, तो उसका भी उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन एज वेल एज दैट revolution which earth is making over there। and the third thing
सो एज वी आर नोन कि अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसलिए देयर वी आर आल्सो गोइंग टू कंसीडर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस कर्व्ड अर्थ सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ। Okay, so these are few of the point which we have assumed that they are not there. Okay, they do not have any effect during this projectile motion. Okay, so student, where we are using this projectile, तो इसका अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल यूज स्टूडेंट जैसे एज वी आर नोन जो हमारे पास जेवलिन थ्रोअर होते हैं, ठीक है। जेवलिन थ्रोन जब भी की जाती है, थ्रोन, सो एज वी आर नोन कि जो भी सबसे दूर जेवलिन थ्रो करेगा दैट विल बी द विनर, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज़ किया जाता है। देयर आफ्टर दैट शॉर्ट पुट विच वी आर यूजिंग, शॉर्ट पुट, ठीक है। तो जो शॉर्ट पुट है उसके लिए भी हमारे पास स्टूडेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ओवर देयर दैट टू हैव दैट sixes in the cricket, okay, so their projectile motion it is very much important while we are playing this basketball. So that time there is the use of this projectile. Okay, so thus even though in football we are having this helpful that concept of projectile, so that we can say that projectile it is also needed in that case when we are providing the help in those area which is flooded area, which is covered underwater. Okay, so there those people who are in that trouble, so we are providing the support to them. So that time we are throwing the food packages from the helicopter. So this will also be thrown with the help of this projectile knowledge. And similarly that when there is the fight between the two countries, so they are throwing that missile on each other, so for that exact position they are using this projectile. Okay, so everywhere that we are having this projectile it is much more required, its knowledge. Okay, so that's all from my today's video. In next day video we will have this derivations which is regarding to projectile, time of flight, time that horizontal range, etc. So thanks for watching this video.